रात है और रात्रि के 9 बजे हैं। आपका चिरपरिचित ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, जिसे आप सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। हमारे स्मार्टफोन के यूजर, एंड्रॉइड फोन के यूजर और आईफोन के यूजर भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे इस ऑनलाइन रेडियो स्टेशन का आनंद उठा सकते हैं। यह है प्रोग्राम एक मुलाकात और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आपका साथ निभाऊंगा मैं, आपका दोस्त अमित भट्ट, पूरे अगले 1 घंटे तक। एक दौर वो था जब दृष्टिहीनों को, या यूं कहना चाहिए पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को, खास तौर पर कुछ विशेष अवधों तक, विशेष एरियाज थे जहां तक जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, जहां तक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, तो वहां दृष्टिहीनों को एक सीमित स्थान तक समझा जाता था या उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। खासतौर पर हम पूर्व में जाएं, इतिहास में जाएं तो 60-70 का वो दशक था जबकि ये माना जाता था कि दृष्टिहीन केवल संगीत के ही क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। म्यूजिक उसका एक ऐसा एरिया है जहां की वो अपने जौहर दिखा सकता है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे समय बदला, दृष्टिहीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के और सजग हुए और बहुत से ऐसे क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग और तमाम कहना चाहिए कि ऐसे एरियाज आए जहां की दृष्टिहीन न केवल संगीत के क्षेत्र में बल्कि संगीत से और आगे बढ़ के टीचिंग के क्षेत्र में, कॉलेज में लेक्चररशिप के क्षेत्र में और तमाम जो भारतीय सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट्स कार्य कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे करके विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी मिलना प्रारंभ हुआ। और आज तो दौर वो है दोस्तों कि जबकि न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों में या कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी दृष्टिहीन एम्प्लॉइज बढ़ चढ़ करके बेहतरीन प्रदर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं और साइटेड काउंटर पार्ट्स के साथ मिल करके वो काम कर रहे हैं। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दृष्टिहीनों को प्रदान की जा रही है उसका बखूबी कहना चाहिए अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ और अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए दृष्टिहीन एम्प्लॉइज या प्रोफेशनल्स वो काम कर रहे हैं। और ये जो एक पुराना दौर था दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भाई 60-70 के दशक में खास तौर पे तब ये समझा जाता था कि भाई संगीत ही एक ऐसा एरिया है जहां दृष्टिहीन जो है वो अपने जौहर दिखा सकता है। और उस समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दृष्टिहीन व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS या भारतीय सिविल सेवाओं में भी उत्तीर्ण हो सकता है और उसको उसमें कोई स्थान प्राप्त हो सकता है। भाई दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से दृष्टिहीन व्यक्ति भी, चाहे वो वुमेन्स की बात करें या मेंस की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा या यूं कहे कि इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं और वहां उत्तीर्ण होने के पश्चात वो उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत से हमारे दृष्टिहीन साथी हैं और आज हम अपने इस कार्यक्रम में जिस वुमेन गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, जो आज की हमारी इस शो की गेस्ट हैं, वो एक विजुअली इम्पेयर्ड वुमन है, यंग डायनामिक वुमन है। जी हाँ, 24 वर्षीय चेन्नई की बेनो फजीन एक और ऐसी दृष्टिहीन शख्सियत बन गई हैं जिन्होंने कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 343वां यानी कि 343rd स्थान प्राप्त किया और फेजीन का भी नाम
उन चंद दृष्टिहीन लोगों में शामिल हो गया है, उनके लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने कि दृष्टिहीन होने के बावजूद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके अपना एक नया मकाम हासिल किया है, एक नया स्थान बनाया है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ, आपका अपना चिरपरिचित ऑनलाइन रेडियो स्टेशन www.radioudan.com। जल्दी ही हम बातचीत करने वाले हैं आज की हमारी गेस्ट बेनो फजीन से, और उनसे मैंने सीधे टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे की गई हमारी बातचीत हम बस कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे। स्टे ट्यून्ड इन, सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों, जब इंसान को कोई सफलता प्राप्त होती है, या कहना चाहिए कि कोई इंसान जब अपने स्वप्न को साकार होता हुआ देखता है, अपने ड्रीम को फुलफिल होता हुआ देखता है, तो उसे स्वाभाविक तौर पर बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। जाहिर सी बात है कि बेनो फजीन को अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्नता हुई होगी और उन्होंने गौरव का अनुभव किया होगा, जिस तरीके से वो एक और वुमन हैं, विजुअली इम्पेयर्ड वुमन हैं, जिन्होंने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जो कि यूपीएससी के द्वारा संचालित की जाती है, उस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। जी हाँ, तो मैंने टेलीफोन पर बेनो से बातचीत की और सबसे पहले उनसे यही जानना चाहा कि अपनी इस सफलता के बाद और अपने इस स्वप्न को साकार होने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। हमारे इस प्रश्न के उत्तर में बेनो फजीन ने कहा, So this is the moment actually I was expecting, because I was studying and preparing for this for a long time in the sense 2 years, and this is my second attempt. And obviously the feeling that I got a decent rank of 343 made me glad and happy and confident as well. At the same time, I thought that I should have worked little more harder, or I should have written more well, so that I could have got even more better rank. So I think it is a mixture of feeling that I felt proud, at the same time the feeling that I need to improve a lot. Right. So you actually wanted to become an IS officer one day, or when it has happened, by an incident? I won't call it an accident. It is just an incident, because I was preparing for this. I know what I am preparing for. So that was for the civil services examinations. That was aimed towards cracking the exams conducted by UPSC. So I think it did not happen on a random basis. It happened out of sheer hard work and determination and collective effort of so much people, including my family, parents, my relatives, and especially my dear friends. Right. No, but that means you wanted to become an IS officer. When you were in, your college life, when you were studying in your school, right? So, have you ever thought that in that period, in that era, when you were in school and college, that you would be an IS officer one day? So, when I was in my 11th and 12th, I seriously thought that I should become an IS officer, because most of us are been told that we can become lecturers one day, we can become lawyers one day by others when we were in school. But some dreams just melt away, some dreams just go away, some dreams just fly away. But at the same time, some dreams just
stay away in your mind. So I think IAS and the civil services as such a dream for me, which stayed in my mind from my 11th standard. Though I did not kind of take lots of efforts to fulfill that dream from 11, because I thought that is the time for enjoying. I really started my preparation during the first year of my PG. Right. And that's So it's wonderful. like the last year of my UG and the first year of my PG. Yeah. हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन मिर्ज़ा गालिब के अलावा भला और कौन दे सकता है। दोस्तों, रेडियो उड़ान के इस खूबसूरत सफ़र में मैं आ रहा हूं आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को, आपके शौक़, आपकी खूबियों को जानने, आपसे गुफ्तगू करने। तो सुनना ना भूलिए मेरे यानी आपके अपने दोस्त कमल के साथ प्रोग्राम गुफ्तगू, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। What sort of difficulties actually you confronted, when you attended the coaching classes and all with other cited counterparts? So was it really easy, or there were some difficulties, when you were preparing for this exam? Sir, as far as the difficulties related to coaching institutes, attending with my cited counterparts, I didn't really feel anything difficult because I am really good at Braille. I write very, very fast. So when others were taking notes, I was writing in Braille. So as far as attending the coaching institute was not a big deal for me, because wherever I wanted to go, my father took me there. But one thing which I wanted to mention here is that many books related to civil services, or the books which the civil services students ought to read, were not available, or still are not available in Braille format and accessible formats as well, like audio and so on. So I took effort to convert Lakshmikant's quality into Braille, because I was more comfortable with Braille than audio. So I used that. And apart from that, many books I read using JAWS, and also I read with the help of my parents and my friends, especially my mom, and very few friends really read
intuitively for me. At the same time, with the help of screen reading softwares I read. So I think some effort should go into converting at least the must-read books for civil services. Those kind of books should be converted into accessible formats for visually challenged in future. That's really great on your part that you have, prepared all your notes using Braille script. And at this juncture, when the computer technology really on its forefront, and people are actually not focusing on the Braille, which we all should actually. But on the other side, you have done a lot of things related to your exams in Braille itself. So, and it's really a tedious task. It is not an easy. So I think this is a great message and learning for all those who are actually skipping the Braille these days. Well, now... Sir, I personally feel that Braille is very much essential, though technology has taken a very prominent place. Because Braille makes you... Technology can fail sometime or the other, but Braille can never fail. Exactly. And when you work hard, when you take so much of effort to write something, I think that really stays in your mind than, using technology and so on. So I think I don't deny the fact that technology is essential and technology is in the forefront, but yet I think we should not put Braille usage on the sideline. Right. I would like to know something about your personal life. When did you lose your eyesight? You are blind by birth, or you are the late blind? Blind by birth. Right. So, and what do you do? Because you are working as a provisionary officer in State Bank of India. Then you might have taken a lot of time for your exam preparation for the result you have got. So, however, it's a human nature and human tendency to get some personal time for personal leisure and all. So, what are your hobbies and interests whenever you get this spare time in your life? Well, as far as my hobbies are concerned, I read books, lots of books, and I'm an orator. So I listen to all these orations, famous orations, and I frequently attend these motivation classes to motivate people by being the speaker for that day. So I enjoy doing that. I think these are my hobbies. I enjoy these things. Right. And now, are you really satisfied with the position you have secured? You got the 343 number position. So, do you think that you could, score much better, or is this fine with you? 343 ranking being a blind. So, what is your take on this? Well, as far as I'm concerned, I'm happy that I cleared the exam. I'm happy that I could clear the exam in the second attempt. Right. And I am happy that I was able to complete my PG and I was able to secure a job during my preparation. I'm actually studying PhD. That fact also makes me happy that I'm doing so many things along with this. But 343 is not really my cup of tea as far as I'm concerned. I think I was expecting actually below 100, but things really didn't turn out the way I expected. But that's okay. Anyway, life will become completely bored if you get what you want immediately. So you need to fight and get what you want. Right. So now when your result is out, and in the coming time, very soon I think you will be sent for the training for the IAS officials, probably in some other part of India. So are you excited, and what is your next plan? So the service allocation is expected to come in August. Okay. It is expected, tentatively expected. I don't know when it is actually going to be coming.
So as soon as it comes, I'll just examine what kind of service I'm getting, and then I'll join the training accordingly in September, which is supposedly to start from September. So I think these are the plans, all tentative plans, but this tentativeness also makes life little thrilling. Right. दिल की कलम से। जी हाँ दोस्तों, दिल की कलम जो चलती है दिल से, एक आवाज जो निकलती है दिल से, एक एहसास जो रहता है दिल में, एक अल्फाज जो बने दिल की जुबां, एक खामोशी जो करे खुद से बातें, एक दस्तक जो रहती है दिल पर, एक खुशी जो होती है आपसे मिलकर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे सपना और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम दिल की कलम से। तो आइए और मिलिए मुझसे हर गुरुवार शाम 7 से 8 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। साहित्य की खुशबू फैलाता आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है समय, केवल और केवल रेडियो उड़ान पर। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रत्येक सोमवार शाम 7 से 8 बजे तक, पुनः प्रसारण मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे तक, केवल और केवल रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। Would you like to share some moments which you spend in your school? I think you did study in Little Flower School in Chennai, so I think there would be some memories to your mind which you had in your school with your counterparts and with your teachers and all. Can you memorize those moments with us? So one moment which I frequently think of is this. When I was in my 11th, myself and my friends organized the school assembly, and one girl was absent, but still we wrote the script, her script. Someone kind of managed to do that, and we were like running here and there, and it might be a very small thing, but still it stays in my mind because we had so much of fun during preparing the script and allocating a person instead of the absentee and so on. So I think that moment remains unforgettable. Right. And you have done your graduation in English literature and you are doing PhD as well in that subject. Yes. So, I mean, do you like English, or was there any other reason to choose English as a subject? Well, I wanted to pursue civil services when I was in my 11th and 12th, as I was mentioning before. And that is why civil services demands a graduate degree. So I opted for BA English. But then my college was Stella Maris,
and I began to like English because of the way my lecturers were teaching it, and because of the way the students were enthusiastic on reading books and collecting information and writing assignments and preparing seminars. So that gave me a push, and I gradually got into that realm of, English, and that is the final result is my PhD now. Right. How much time, you used to give to your preparation for the IAS exam? Sir, I don't believe that the quantity time is very important, because you may study 12 hours, but there is no use if you are not concentrating. So for me, quality time is very important. I think how you study is also equally important along with what you study. So for me, I studied for 2 or 3 hours per day, because I was working, I was studying in college, and all these things were happening along the preparation. So I was studying for 2-3 hours, but before the exam, or some 15 to 20 days before the exam, I will study without counting the number of hours. That is my strategy. But this is not a compulsion that everyone needs to follow this strategy. It depends upon person to person. I think that should be on case to case basis. Right. Couple of more questions before we wrap up this interview, Beno. Yes. What you would like to do, differently actually, when now it is very much sure that you are going to be an IAS officer. So, and you would be liable and responsible, you can say for the state, for your district, for your country and all. So, how do you think that you are going to, make some difference when now you are going to be an IAS officer? So there are 2 things here. One is I have not entered into that realm, and moreover I am not sure what service I'm going to get. So second thing is without entering into that particular realm, I don't think it is appropriate to comment on that. But one thing I would like to say is this: whatever I can do, whatever service is allocated to me, whatever position I am in, whatever capacity I have, within all these things, within law, I think I would do the things that would result in the maximum welfare. So I think this would be a realistic answer, instead of bringing in the things which I have not really stepped into. Right. And finally, would you like to convey any message to those students or those people who would like to prepare for UPSC exam or such kind of exams in India? Sir, any person for that matter, whether it is going to be a UPSC aspirant or whether it is going to be someone else, I remember this quote: I can't do everything, but I can do something. I will not refuse to do that I can do. I need to repeat this, I think. I can't do everything, but I can do something. I will not refuse to do that I can do. These are the words of Helen Keller. So I believe in these words. We should not say no to things that we can really do. So I think we should try and find strategies, approaches and methodologies to do those things, to perform those events. I think in that framework falls the challenges as well. So I think there is no reason that we blame ourselves. We should move on. We should understand and accept our strengths and weaknesses. We should devise strategies for ourselves, and then we respect ourselves and others equally, and when we honor our own dignity, I think we will reach greater heights. Beno, in behalf of entire Radio Udan team, we congratulate you on this huge success and wish you all the very best and every success for your future. It was wonderful talking to you, and thank you for being with us on program Ek Mulaqat. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Dhanyawad.
तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी बातचीत बेनो फजीन के साथ। जी हाँ, बेनो फजीन जिन्होंने की यूपीएससी द्वारा संचालित भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता अर्जित की। इस भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने जीवन की सफलता की एक नई कहानी लिखी है। आप प्रोग्राम एक मुलाकात के बारे में अपने विचार और फीडबैक हमें ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपका वही चिरपरिचित mail@radioudan.com और सीधे मुझे संपर्क करें amit@radioudan.com पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अर्थात रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकेंगे कल शाम यानी कि शनिवार शाम 4 से 5 इसी चैनल अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन www.radioudan.com पर। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह आज ही के दिन यानी शुक्रवार को रात 9 से 10। और भाई, कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है भारत में और भारत के ज़्यादातर जो भाग हैं वो गर्मी से जूझ रहे हैं। और ऐसे में हम सभी को अपनी हेल्थ की खास तौर पर केयर करने की आवश्यकता है। सेहत की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और अगर मस्त रहेंगे तो फिर हम रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम प्रसारणों का भी आनंद उठा सकेंगे, लुत्फ उठा सकेंगे। तो इसी आशा के साथ और इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ कि हमारे श्रोता खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, मैं आज का प्रोग्राम एक मुलाकात समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अगले सप्ताह एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नई सफल शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सफलता की कोई कहानी गढ़ी है, कोई कहानी लिखी है, ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर हाजिर रहूंगा मैं आपकी खिदमत में, आपका दोस्त अमित भट्ट। आप सुनते रहें रेडियो उड़ान। नमस्कार।